चलो next question. There are two securities X and Y. We have been provided with the standard deviation for the individual security. Correlation coefficient is negative 0.5. You are required to answer following simple questions. Find minimum variance portfolio and risk at that time. तो न केवल आपको मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, तब रिस्क क्या होगा वो भी फाइंड करना है. सेकेंड क्वेश्चन है, इफ इन्वेस्टमेंट इज मेड एज अंडर, तो हमको दो अलग अलग पोर्टफोलियोज दे रखा है, अगेन आपको उसका भी रिस्क फाइंड करना है. चलो, ट्राई टू कैलकुलेट आंसर ऑफ द ओनली फर्स्ट क्वेश्चन एंड पुट बोथ आंसर्स ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. चलो, लेट अस सी कैसे किया जाएगा. लेट एन आंसर calculation of Wx in minimum variance portfolio. In that, write down variance of y minus r into standard deviation of x into standard deviation y whole divided by variance of y plus variance of x minus 2 into correlation coefficient into standard deviation of x into standard deviation y. That is the way Wx is calculated. Variance of y, in that we understand that it is square of 30 minus 0.50 negative into standard deviation of x है 30 और standard deviation y है 10 whole divided by variance of x, that is square of 10, variance of y, it is square of 30 minus 2 into negative 0.5 into standard deviation of the individual security. Square of 30 is 900 minus 10 into 30, that is 300 into 0.5, that comes to 150 negative, whole divided by square of 10 is 100, square of 30 is 900 minus 10 into 30, 300, 300 into 2, 600, 600 into 0.5, that comes to 300 negative. What is the numerator value? Numerator value is 750. Divided by what? Divided by 600 minus 300, that comes to 900. So 750 divided by 900. I am sorry, there is a mistake on my end. This is positive and this is also positive. So the numerator is 1050 divided by 1300. That comes to 0.8077. That is the way the weight of x is calculated, and the remaining will be the weight of y. Next, calculation of variance of portfolio. It is Wx square sigma x square, Wy square sigma y square, 2 into r into Wx Wy, standard deviation x, standard deviation y. So weight of x is 0.8077 raised to 2. Weight of y would be 1 minus weight of x. So it is 0.1923. Into standard deviation of x is 10, standard deviation of y is 30.
2 इंटू आर, आर कितना है, आर है नेगेटिव 0.5 इंटू वेट ऑफ एक्स कितना है 8077, वेट ऑफ वाई कितना 0.1923 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10 और 30, so over here 0.8077 का स्क्वायर इंटू 100 that is 65.24, square of 30, I'm sorry, square of 0.291923 into 900 that is 33.28 minus 2 into 0.5 into 0.8077 into 0.1923 into 300, that comes to 46.60. So finally it will be 65.24 plus 33.28 minus 46.60, so it is 51.92. तो 51.92 क्या हो गया, वेरिएंस हो गया, उसका रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 7.2056. That is the standard deviation of portfolio if at all we make investment as per minimum variance portfolio. सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए वी हैव मेड द कैलकुलेशन ऑफ द वेट ऑफ एक्स. सो वेट ऑफ वाई इज बैलेंसिंग फिगर 0.1923. उसके बाद वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो और उसके बाद उसका स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ ट्राई टू डू सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑन योर ओन, जिसमें हमको दो पोर्टफोलियोज दे रखा है. पहला पोर्टफोलियो 0.85.15, दूसरा पोर्टफोलियो 0.75.25 और दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है. प्लीज कैलकुलेट आंसर एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. चलो रेड ऑन आंसर. कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, बहुत सिंपल फॉर्मूला यूज करना है. डब्ल्यू एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर, डब्ल्यू वाई स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, 2 इंटू आर इंटू डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. एक्स का वेट दे रखा है 0.85, वाई का वेट दे रखा है 0.15. एक्स का वेरिएंस हमको दे रखा है 10 का स्क्वायर, वाई का वेरिएंस दे रखा है 30 का स्क्वायर. 2 इंटू आर, आर कितना है, इट इज नेगेटिव 0.5 इंटू वेट ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ वाई. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई. That is the way we are supposed to calculate answer. So square of 0.85 into square of 10 is 100, so 72.25. Square of 30 is 900 into square of 0.15, 20.25. minus 2 into 0.5 into 0.85 into 0.15 into 10 into 30, that is 38.25. $72.25 plus 20.25 minus 38.25, that is 54.25. और इसका क्या करेंगे, रूट करेंगे
That is the way standard deviation of the portfolio is calculated. Now the next is weight is 80 and 20, and for that say we are required to do similar answer. So next is calculation of sigma p square. Once again, wx square sigma x square, wy square sigma y square, 2 into r into wx wy, standard deviation of x, standard deviation y. तो सिक्योरिटी x का वेट कितना है 0.75, y का कितना है 0.25, x का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 10, y का कितना है 30. 2 into r is negative 0.5 into weight of x into weight of y into standard deviation of x into standard deviation y. So in that case, square of 10 is 100 and square of 0.75, that is 56.25. Then square of 0.25 into square of 30, that is again 56.25, minus 2 into 0.5 into 0.75 into 0.25 into 10 into 30, that comes to that is 56.25 once again. So answer would be 56.25. So standard deviation of the portfolio would be equal to under root of the variance. So it is under root of 56.25, and that comes to 7.5%. That is the way the standard deviation of the portfolio can be calculated. So let us have a review of the entire answer once again. सबसे पहले हमने मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो है ना, उसका वेट कैलकुलेट किया और उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या वो कैलकुलेट किया ना. आप देखो, अगर हम लोग डेविएट होते हैं, एक्स का वेट बढ़ाते हैं तो भी रिस्क बढ़ता है, और एक्स का वेट कम करते हैं ना तो भी रिस्क बढ़ता है. सो दिस इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड. यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो हमारे क्लाइंट है उनको ऐसा समझाएंगे कि अगर आप ये दोनों सिक्योरिटीज़ के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको लोवेस्ट 7.2056 का रिस्क लेना ही पड़ेगा. रिस्क उससे बढ़ सकता है, उससे डेफिनेटली कम नहीं हो सकता है. दिस इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड ओवर हियर से विद द मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन. अगेन फ्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट से जो भी अलग अलग पोर्टफोलियोज का कॉम्बिनेशन होगा तो वो कुछ ऐसा फॉर्म होगा, ऐसा. तो उस केस में ऐसे कुछ फॉर्म होगा. उस केस में वी अंडरस्टैंड दैट से ये जो है दैट इज द मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो. नाउ इफ एट ऑल यू डेविएट फ्रॉम दैट पोर्टफोलियो on that is on either of the side, you can see risk increases. दोनों में क्या रिस्क बढ़ेगा, एक में क्या होगा रिटर्न बढ़ेगा, एक में रिटर्न रिड्यूस होगा. तो टेक्निकली हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ये सारे पोर्टफोलियोज है ना वो इनएफिशिएंट पोर्टफोलियोज हो जाते हैं और ये सारे पोर्टफोलियोज क्या हो जाते हैं, एफिशिएंट पोर्टफोलियोज हो जाते हैं. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. यहाँ पे हमको एफिशिएंट इनएफिशिएंट का डिस्कशन नहीं करना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली क्या होगा कि on one side there are efficient portfolios, on the other hand there are inefficient portfolios, and definitely हम लोग इन सब में से कोई एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करेंगे. This is what we understand, that's from the calculated answer.